तो हेलो रचित वर्मा, वेलकम टू स्ट्रीम। थैंक यू भाई, माइक बंद था, सॉरी। तो चलो भाई स्टार्ट करते। फाइंड द सीक्रेट बेस। भाई पता है किसी को? रचित भाई तुमको पता है? और कहाँ रहते हो भाई? मुंबई? मुंबई में रहते हैं भाई हम। मैं करके भूल गया, अरे यार। मैं अभी चालू किया हूँ तो भाई मुझे कोई बताता ही नहीं है। अच्छा इधर है सीक्रेट बेस, लोकेशन तो है। आरा नारा का साला आधे से ज्यादा लोकेशन बताता ही नहीं है। अमेरिका? वाह यार, यूपीएससी थोड़ी ना है जो याद रखूं। यूपीएससी कौन याद रखेगा? उसकी पढ़ाई करने में पूरी फट जाती है भाई, तो याद तो रखना पड़ेगा। नहीं भाई, कल या परसों आएगा ये सवाल यूपीएससी में। मिस चैट? अरे वो तरुण भाई, मैं इसका पोल करूंगा। अब मैं भी करूंगा, मेरे को सही लगा वो भी। मैं भी पोल करूंगा। चैट मिस हो रहा? अच्छा मिस चैट। हाँ वरुण भाई। अच्छा तरुण ने तुम्हारा चैट मिस किया, उसने कुछ और समझ गया, कुछ और समझ गया। हाँ। या म्यूजिक बजा बजा के खोलना, ये करके फिर अपन नया क्वेस्ट करेंगे। हम्म।
गेंशिन इंटरव्यू मैप 476 Arena स्टेशन। यार मैप देखते रहूंगा तो भारी पड़ जाएगा। अबे वो है ही नहीं। किधर गया यार? मेरा मैप खुलवा दो भाई। मेरा AR-45 है और 5 स्टार मेरे पास गिने चुने ही है भाई। एक ये योमिया है 5 स्टार, एक चीची है, एक जीन है जो अभी पोल मैंने भाई पीटी लूज किया तो जीन निकली चाइल्ड के इसमें। सबसे पहले मोना निकली, दूसरी चीची, थर्ड योमिया, फोर्थ अभी रिसेंटली जीन निकली है। यो शुभम भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। आगे क्या पोल करोगे? आगे अभी मैं ये स्कारा का इवेंट देखा तो भाई स्कारा अच्छा लगा तो सोच रहा हूँ पहले उसको ही करूँ मैं। स्कारा अच्छा है भाई एनिमा करेक्टर। मेन चीज तो वो एक्सप्लोर करने में ज्यादा फटाफट मदद करेगा। हमको मित्र बनाओगे? अरे भाई भेजो तो आईडी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो तो। आपके लिए हिंदी भी पढ़ लिया, मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती लेकिन पढ़ लिया यार, क्या बात है। अब तो गारंटेड हो गए हम तुम। चलो रे, ये खत्म करूँ फिर नया क्वेस्ट खोलेंगे आज। अरे यार ये लेना नहीं था, रास्ते के बीच में तो ले लेना पड़ा। अरे यहाँ पहले आया है क्या मैं? वसीम भाई मेरे जैसे नूब का हेल्प करा दो। UID दिखी? नहीं भाई UID नहीं दिखी। किधर भेजे? UID भेजो तो रुचित भाई। आरा इसकी माँ का सयोनारा, बस यही कर रहा हूँ, इसके बाद क्वेस्ट करेंगे। ये कल छूट गया था थोड़ा सा तो ये भी कंप्लीट कर रहा हूँ। यूट्यूब हाइड कर रहा है शायद। हाँ नंबर से डालेंगे तो हाइड करता है वो, अपने को कॉमा वगैरह डाल के करना पड़ता है। वेलकम टू स्ट्रीम भाई। आ रहा क्वेश्चन चाहिए मुझे। अरे टाट, रुक जा, कन्वर्जेशन बंद हो जाएगी। कन्वर्जेशन बंद हुआ ना? अच्छा आ गया। मेरा तो हाइड नहीं हुआ। तुमने भेजे ही क्या अभी तक? हाँ भाई दिखा, बस अभी भेजता हूँ।
नहीं हाइड हुआ भाई, दिख रहा है, अभी हाइड करता हूँ। ये बुढ़िया वहां भी जब पूछा तो कुछ नहीं बताती, यहाँ आके मरवारी बराबर। जो भाई AR-60 भाई रे भाई काजुआ। क्या आर्टिफैक्ट लगा है? बाप रे C2। भाई रेडन के लिए पक्का पोल करने वाले हैं ये भाई। एक नंबर। नाइस भाई। रचित भाई बड़े प्लेयर हो, मेरे से क्या करवा रहे हो भाई, ऐड हो जाओ खाली। क्या बात है, बस सब बड़े प्लेयर ही है। फिर एक मिनट, बिल्ड की हो यार। डकेच। अच्छा यही शॉट निकालने बोल रहे थे क्या मेरे को? आज तक एक पैसा नहीं लगाया भाई। मैंने भी कहाँ लगाया, अभी तक एक पैसा भी नहीं लगाया। तो यही मेरे को वो फिश पकड़ के यही निकलती है क्या ये वाली शॉट? Those memories, so dark. ओके तो ये पकड़ेंगे भाई, अपन भी फिश पकड़ेंगे भाई, ऐसी शॉट मिले तो फिश पकड़ेंगे। ओ भाई कॉन्सोलेशन भाई, अपने को तो अभी तक एक भी नहीं। These bombs, so heavy. बाद में देखेंगे भाई इनका भी। भाई तुम तो बड़े प्लेयर निकले हो दोनों जान। केले की वॉइस एंड वॉइस एक्ट्रेस इंडियन है। ये साला ये मोबाइल में चार्ट पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। आंखें दुखने लग जाती है। भाई फिर भी 2 साल ही लगा ना तुमको भी, ऑलमोस्ट 2 साल लग गया तुमको भी। अभी देखो मैं AR-60 कितने दिन में पहुंचता हूँ, या कितने साल में।
ये क्या ग्लिच है भाई, मेरे को देख ही नहीं रही। एक भी वॉचिंग। सब है चैट पे कि सब गए? क्योंकि मेरे को वॉचिंग दिख ही नहीं रही है। एक वॉचिंग ही है, हाँ। सब चले गए, कोई बात नहीं। देखो ये भाई भी तो है, लेकिन वॉचिंग मेरे को नहीं दिख रही बराबर। मैं 2 नवंबर 2020 को चालू किया था, जुलाई में यार 60 हो गया 2002 में। मैंने ये गेम बहुत पहले डाउनलोड किया था, पर मैंने सिर्फ लॉगिन किया, थोड़ा सा चेहरा देखा, फिर बंद कर दिया। फिर अब भी जस्ट अक्टूबर में चालू किया खेलना 2022 में। अभी देखते कितना साल लगता है मुझे AR60 पहुंचने। और हाँ भाई, मेरी कैच तरुण, मुझे वो कैच कराने में हेल्प कर, मुझे वो चाहिए। मैं भी भाई आसानी बिल्ड करूंगा। UID पे लिखा हुआ रहता है क्या कौन से डेट को हुआ है? 81743735 इसमें कैसे पता चल गया मेरा पुराना आईडी है? मैं तो 80 से स्टार्ट किया। अबे 80 कौन सा 80? सिंस 80 यह स्टार्टेड ऑन दिसंबर और जनवरी 2021। स्टार्ट नहीं किया था, बस डाउनलोड किया, नया नया आया ऐसा लगा था। ऐड देख के मैं नया नया मैंने किया था, तरुण भाई ने बताए थे। 800 वाले फर्स्ट डे प्ले। ऐसा है। मैंने तो बस डाउनलोड किया था, लॉगिन किया। मैंने स्टार्टिंग में मेरा AR1 ही था, तो मैंने खाली इधर उधर देखा मैप थोड़ा सा। वो जब मेरे को सामने ये कीड़े मकोड़े दिखे तो मैं चिढ़ गया था। मैं बोला भाई ये क्या से गेम है। बाद में ये तरुण ने मेरे को बताया खेल के तो देखो, तो अभी खेलना चालू किया तो अच्छा लगा। चलो ये खत्म हुआ कि बाकी? अबे यार, सर्चिंग फॉर मैकेनिकल कंपोनेंट 2 पीस। इसकी अम्मा की यहाँ कभी, ये कहाँ ढूंढूं मैकेनिकल कंपोनेंट? ये साला ऐसा देते ना इन लोग। चलो कोई ना। ए तरुण, मेरी मच्छी पकड़वा रहे। ये फिश का ही है ना? ओहो, बड़ी बड़ी फिश है, पर यहाँ से नहीं, वहां से पकड़ी जाएगी। सारी मच्छियां भाग गई बे। अरे तो
चलो अपने जाल में कोई मच्छी आती नहीं, अचीवमेंट में जाके देख सकते एग्जैक्ट डेट, अचीवमेंट में जाके। एक मिनट रुको मैं देखता हूँ। अच्छा कैच की फिश समारोह में नहीं मिलेगी, ए भाई हटा हटा जल्दी हटा, नहीं चाहिए। अचीवमेंट में जाके देख सकते हो, एक मिनट रुको, अरे ये क्या खोल रहा है अचीवमेंट, कैसे पता चलेगा? इसमें कहाँ डेट लिखा है, इसमें कहाँ डेट लिखा है? बंदोड़ वर्ल्ड में जाओ, ओके ठीक है, बंदोड़ वर्ल्ड में गया, हाँ। कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड। 22/11/2022 फर्स्ट अचीवमेंट। उसमें होगा गे पावर ऑफ एनिमो वाला अचीवमेंट, पावर ऑफ एनिमो वाला इधर देखना है तो नंबर से करो, हमारे ऐसे में होगा पावर ऑफ एनिमो। 2010 ये पहला है, थर्ड पास। लेट द विंड लीड नाम है, लेट द विंड लीड। लेट द विंड लीड, ओके। 8 अक्टूबर 2022 को किया हूं मैंने। फिर 10/2022 पहला अचीवमेंट। हाँ तो अभी चालू की है, यूआईडी पुराना है। तो कुछ मेल आया बे, कुछ फ्री में कुछ मिला क्या? अबे 1000 मोरा से क्या होता है इसकी जात का, इसकी वो टाट उधर क्या कर रहा है? ये इधर क्या कर रहा है बे, छोड़ के कहाँ चला गया? करना क्या चाहते हो भाई? बॉस मारना है, बॉस अभी कहाँ है, मेरा हो चुका है ना। हाँ चल 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 बॉस मारेंगे, चल। किधर किधर मच्छी 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 मच्छी, ओ मेरी मच्छी, आजा। हाँ मैं कल रो किया था, कोड रिडीम किया था मैंने, स्ट्रीम पे वो डाला भी था कोड।
कल लाइव स्ट्रीम में देख रहा था मैं भी, गेंशिन का स्ट्रीम करते हुए ही देख रहा था। रुक मैं प्लेयर चेंज कर लूँ। रुक जा, मैं प्लेयर चेंज करके आता हूँ। मतलब थोड़ा हेल्थ बढ़ा के आओ योमिया का। मारते हैं इसको बेनेट से। योमिया फुल हो जाए। हो गई। मेरे इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है? हेलो टर्बो गेमिंग भाई, वेलकम टू स्ट्रीम भाई। तरुण 10 अक्टूबर में भी 2 अक्टूबर को चालू किया था क्योंकि 4 दिन डाउनलोड कर मेरे को भी 1 दिन लगा था भाई पूरा डाउनलोड करने में। पैर नहीं रख सकते ना इसके नीचे। The fireworks are gonna get soaked. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many भाई forms. फास्ट नेट होगा In इसलिए 30 this मिनट way, होगा। shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Teamwork is dreamwork. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. हाय पीयूष भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। हाय साहिल भाई। The power of water is its ability to take any shape. मैं इसको मारता तो उसको मार। Fuse is lit. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's light it up. Let's see what happens when you lose your foothold. तो चीची लेके बैठा, मैं फुकट हेल्प कर रहा हूँ। The power of water is its ability to take any shape. I'm going in. As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. ओहो ओहो चालू। ये 3 मिला है, बहुत सही चलेगा। चलो भाई यहाँ से अलविदा करो, अलविदा करो इसको। दूसरी जगह चलेंगे। क्या करूँ, क्या कमीशन कंप्लीट कर। तो उधर जा, मैं बकबक वाला कमीशन करता हूँ। बाकी लो वर्ड में क्लेम करोगे तो लो रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ 3 मिला ना भाई, 5 स्टार आर्टिफैक्ट मिला बस। और कहाँ चाहिए। आर्टिफैक्ट ही ढंग का जॉइन नहीं हुआ ना अभी तक का मेरे पास। एक बार ढंग के मेरे प्लेयर बिल्ड हो जाए तो आगे मैं करूँ, क्योंकि मेरे पास योमिया के सिवा और कोई है ही नहीं।
these training dummies at once? Shame. एक बार में कैसा करूंगा रे? How can I smash all these training dummies at once? तेरी भी 3 ही हुए रे। Shame. अच्छा हो गया। How can I smash all these training dummies at कुछ भी। How can I smash all these training dummies at once? मैं सारा एक बार में कैसे मारूंगा रे? Shame. Didn't make. How can I smash all these training dummies at once? ड्यूलिक बर्ड, जंगली पिलर, अरे नहीं है मेरे पास। Shame. Didn't make. How can I smash? ना जंगली है ना डीलुक है। How can I जंगली smash है ही all these नहीं। training dummies at once? So that's how. वाह, नंबर को यूज करो भाई, उसके लिए नहीं पता था भाई। एम्बर का डॉल तो खाली एक ही तरफ मारता है ना, कि सब तरफ एक जाए, एक झटके में पूरा नहीं मारेगा ना। काजो स्किल, अरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। ज्ञानी चाचा रे भाई, क्यों जला रहे हो? नाम ले लेंगे। कोई भी नहीं है मेरे पास। चीची है, मोना है, योमिया है और जीन है, बस और नहीं है भाई कोई। कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? अच्छा तू जा रहा है ना वहाँ पर, रुक मैं दूसरा देखो कहाँ पर। तू उधर का कर, एक ही बच्चा ये जा कर ले। मैं जाके रियाज को ऐड करता हूँ कि जीन बरसा है, लेकिन था नहीं शायद। Off we go. तो भाई नई स्टोरी किसकी खेल ली है मेरे को बताना। इन लोग में से किसकी नई स्टोरी खेलेंगे? भाई 2 की कैसे बची रहे? अबे मैंने कल नहीं किया क्या? हाउ इज पॉसिबल? अच्छा इधर है ना, वहाँ की मेरे को लगा पूरा है। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ये तो कर रहा है, ये कर रहा था मिशन। Ow! दूसरा इधर है ना। Where did that come from? 100 सब्स पर क्या करोगे? अरे भाई 100 की जगह 500 होता तो समझ में आता भाई। रिकनेक्टिंग इशू हो रहा है मेरा। अरे भाई यहाँ सबका बराबर चल रहा, मैं भी मोबाइल में ही देख रहा लाइव स्ट्रीम, अभी तो बराबर ही चल रहा मेरा भी। रिकनेक्टिंग इशू कैसा गेम में हो रहा है? Off we go. Time for a light show. कहाँ मार रहा है साले? Yeah. Adventure time. Out of the way. Yeah. बे भाई 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 पेड़ रहे Teamwork is dreamwork. पेड़ है भाई, पेड़ है लोग। Fuse is lit. अरे इधर मारना हराम खोर। भाई ये कौन? अरे बड़वा कौन है? बड़वा तो नीचे उतर, हराम ज्यादा नीचे उतर। ले एकदम मरना था तेरा। हाँ मैं क्लेम कर लेता हूँ अपना। वो भी बाकी है, क्या बोलते हैं साथ में क्या रे, इवेंट कर लेते हैं।
इवेंट भी दोनों का साथ में हो जाएगा, वाईफाई पे भी और मोबाइल पे भी हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए This भाई, is रिकनेक्टिंग इशू, या तो great. तेरा I वाईफाई में feel इशू so होगा। relaxed all over. I could almost float away. इवेंट स्टार्ट करते हैं, चलो हाँ ठीक है, हाँ चल पहले इवेंट ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं। वाह, चेस्ट मिल रहा है फ्री में, हमको पता भी नहीं है What do we चेस्ट। have here? पायरो है ना? हाँ बाबा पायरो है, तो प्लेयर चेंज करके अंदर चेंज कर सकते हैं क्या? कुछ दिनों से हो रहा है वो, तुम्हारे इसमें ना पैकेट लॉस आ रहा होगा इसलिए रिकनेक्टिंग इशू आता होगा। पायरो है, एक मिनट रुको भाई, प्लेयर चेंज कर लो, मेरे पास प्लेयर है भी नहीं अच्छे, क्या चेंज करूँ? चलो लगा देता हूँ, वाटर डैमेज तो साथ में देगा। Oh, oh. हम्म, ठीक कैसे होगा? ऑल टाइम गेमिंग कैसे हो? अच्छा हो भाई, ठीक भाई। एक काम करो, तुम्हारा जो ऑपरेटर है ना उसको बोलो कि भाई पैकेट लॉस आ रहा है बहुत, Favonius with you next तो time. वो ठीक करेगा। मछली पकड़ोगे? अरे भाई पकड़ने पकड़ने ही बैठे थे, लेकिन तुम कल रात को थे ही नहीं। चलो आज रात को फिर पकड़ेंगे। सब पायरो ही है। तुम वाटर ले लो, मेरे पास वाटर, मेरे को मोना भी बिल्ड करना पड़ेगा लगता है वाटर के लिए। चले पेपराइज करके देखते हैं। Know my soul. Ring cutter. अरे ये नहीं मारना था हराम जादी, नॉर्मल वाला अटैक मार, नॉर्मल वाला अटैक मारना था, मैं गलती कर दिया। ई दबा के, ई नहीं दबाना था मेरे को, ई नहीं दबा, हाँ ये दबा। किधर कूदा रहे हो? Time to act. Let me weave you a verse. My apologies. तो ये बंद कर दिया है क्या? Body and ring cutter. Quiet. I'm getting sick of this. और धमकी दे रहा है, आईडी डिलीट कर देगा। कौन धमकी दे रहा है भाई, किसको दे रहा है? ऑल टाइम गेमिंग भाई कौन धमकी दे रहा है, क्या धमकी दे रहा है भाई? Not good. Rain outlines its fate. Let me weave you a verse. शील्ड बना लिए दोनों ने। Witness the power of the whack.
भाई 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 No, my soul. Let me read you a verse. क्या शील्ड बनाया ले भाई इन लोग ने। एक नीचे गिरा, उसको लो। गए दोनों गए। मैं उसका क्लिप दिखा रहा हूँ इसी में। आओ ब्रो, वो आओ क्लिप दिखा रहा हूँ। क्या चीज की धमकी दिया, क्यों दिया धमकी, ये तो बताओ। Friends are forever. मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं चालू कर सकता, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट इस टाइम बाहर में खाओ। स्टार्ट जरा देखना क्या यूसी पे क्या है, देख के जरा बता देना। भाई ये तो सांप बन के घूम रहा है रे बाबा। Rain outlines your fate. Take it easy. Witness the power of Gugwa. ओ भाई भाई भाई, That didn't count. पास में पहुंचने भी नहीं दे रहा हरामी। No, my soul. फटेगा ये, फटेगा फटेगा ये, फटेगा। Time to act. ये लेगा मेरी, ये ले लेगा। गिरा 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 बड़वा, गिरा 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 गिरा। चैट जरा देख लेना उसका क्या इशू हो रहा है, कौन क्या धमकी दे रहा है। देखो जरा कौन क्या धमकी देता है भैया, चेक कर लो, बताओ मेरे को जरा से। द फॉरेस्ट को नहीं होगा, स्टोरी नहीं गया, क्लेम किया। कौन सा अनलॉक करना चाहिए आप लोग के हिसाब से? ज्ञानियस साव यालन तो नहीं, तुम्हारी मिलू ना ना ना। Which one you like to watch? Ganyu Shao Yaomiko ya Atayo Ayato Tegnari Sameru. Are you sure? मेरे को बोलो। तो फिलहाल तो ये बीच में आने वाला ब्लॉक होने वाला है, तो ये पहला करना पड़ेगा यार।
मार खाई इस पर मार खाई। यालन यालन ओपन नहीं है। यालन के लिए मेरे को पहले जो क्वेस्ट करना पड़ेगा, ये तीन, ये दोनों, ये एक दो और ये तीसरा करूंगा तो यालन का ओपन होगा। तो मैं पहले गेन्यू खेल लेता हूँ फिर मिको। गेन्यू, हाँ गेन्यू तो मार के मुझे अब खेलना ही पड़ेगा मजबूरन। चलो गेन्यू देख ले यार। ये स्टोरी के बीच में अड़चन आएगी Have इसीलिए। you ever kept goldfish as pets? They're very cute. क्यूट नहीं बाबा, गोल्ड फिश क्यूट नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट देख के दिमाग खराब होता है यार। भाई ये स्टोरी अनलॉक क्यों नहीं हुई? ये स्टोरी कहाँ गई? गेने की स्टोरी कहाँ गई? ओके ठीक है, दिख नहीं रहा ना। लाल हो गया अपने साथ, लाल हो गया, खुला ही नहीं बे। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? स्टोरी क्वेस्ट खुला ही नहीं, वाह। अबे वो स्टोरी क्वेस्ट गया किधर? मैं अनलॉक कर रहा था। नहीं ना, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। स्टोरी क्वेस्ट है नहीं, आर्कॉन है, वर्ल्ड क्वेस्ट है, बस स्टोरी क्वेस्ट है ही नहीं। क्वेस्ट गायब हो गया, क्वेस्ट गायब हो गया, बग हो गया, क्या हो गया? Fireworks are for now, but friends are forever. नहीं है, नहीं है, नहीं है। खुल गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। स्टार्ट, मैं लीव मार रहा हूँ, लीव मार के देखूं जरा किधर गया क्वेस्ट, ठीक है? ओके, अब दिखा रहे बाबा। भाई एक सब, इन सब का क्वेस्ट एंड हो चुका भाई, किसी के पास नहीं बचा है क्वेस्ट। इसलिए तो दूसरी आईडी बना बना के खेल रहे लो। चलो फिर चालू किया जाए। स्टार्ट ना। Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. तुम लोग क्या कर रहे हो तुम? सबसे अलग, अबे भाई। सबसे अलग। तरुण, तरुण, टाट से बात की? अच्छा, वही मैं तरुण को बुला रहा, क्या बात है पता तो चले।
चलो देख रहा है। अबे मैं शायद पानी में गिर गया ना। It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it मतलब alone धमकी all किसको along. दे रहा? तुमको दे रहा She's है, the किसी secretary और को दे रहा है? clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Okay. Have you seen Miss Ganyu, traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times. That's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. चलो भाई स्टार्ट हो गया क्वेस्ट। So Ganyu left to visit Cloud Retainer. अबे Doesn't मेरी she हेल्थ live कैसे in the गई? house zone? We should hurry up. Paimon hopes we थोड़ी can सी find हेल्थ her बची। there. काट किधर है? Head to near empty गमन के ऊपर रहने को। कहाँ चले गए सब? सब गायब हो गए भाई। कोई नहीं दिख रहा है। मेरे को चैनल पे चेक करना पड़ेगा। Fireworks are for now, but friends are अच्छा forever. साहिल भाई तुम हो? मेरे तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा है यार? भाई ये कोने से वो कोना दौड़ा रहे यार इन लोग तो। लीडर स्किन भाई मेरे पास कोई स्किन है? वसीम भाई डीसी डीसी आ जाए वसीम भाई। एक मिनट रुको आ जाए। If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? हाँ तरुण। हाँ वसीम भाई, हम्म एक बंदा है यूट्यूब पर स्ट्रीम कर रहा है, हम्म तो उसको एक ये बंदा बैठा है ना अपने डिस्कॉर्ड में, हम्म
वो अकाउंट भेजा 20 रुपए में कहते हैं, और वो बंदा क्या बोल रहा है पता है स्ट्रीम पे? क्या विशेष डालो वरना अकाउंट डिलीट कर दूंगा, ऐसे ऐसे बात कर रहा है भाई। क्या डालो, विशेष डालो, अकाउंट डिलीट कर दूंगा। हाँ नहीं तो अकाउंट डिलीट करूंगा। लाइक लिटरली ऐसा स्कैम है कि इसको अकाउंट भेजा है वो, फिर ये अगर इस पे पैसे डालेगा वो एकदम से सब पासवर्ड चेंज करने के बाद भी हैक होते हैं ना थोड़े अकाउंट, वो हैक कर देगा सीधा इसको। इसने दिया था क्या अपना अकाउंट उसको? नहीं, वो बंदा ही इसको अकाउंट दिया, इसको उसमें पैसे डालने बोल रहा है। तो छोड़ना मत डाल, छोड़ दे। मैं वही बोला इसको बोला सीधा अकाउंट ही डिलीट कर दे, गेम से गेम उड़ा दे सीधा। अकाउंट उड़ा दिया तो बस है ना, उसको नहीं मिलेगा इसको नहीं मिलेगा बराबर। नहीं, अकाउंट उड़ा दे पूरा। हाँ भाई अकाउंट उड़ा दे भाई, तेरे को अगर तेरा AR कम है तो हम हेल्प करेंगे भाई लेवल अप होने में। भाई सही बोल रहा हूँ ना यार, इंटरनेट स्कैम से दूर ही रहे भाई। तू छोटा है अभी बोल रहा हूँ भाई, बहुत डेंजर है भाई ये सब। मैंने तो अपना क्या बोलते हैं उसको, नहीं अकाउंट डिलीट कर दे, कोई इशू नहीं होगा। अकाउंट डिलीट कर दे भाई। तेरा तो दूसरा अकाउंट है बोल रहा है ना खुद का, वो उसमें खेल ले। तो अगर तेरे को कुछ फार्म करना है डिस्कॉर्ड ये है ना, ये सर्वर में मैसेज कर दे भाई। बहुत सारे लोग खेलते हैं ना गेम, तो बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे। हाँ शुभम भाई, DC पे हम लोग डिस्कॉर्ड पे। ये अपने एक मैं तो अपने दोनों अकाउंट एकदम डिट्टो सेम चला रहा था, सिर्फ आईडी पासवर्ड ही अलग है। भाई अकाउंट का आईडी कैसे सेम होगा रे? तो उसमें कुछ स्क्रीनशॉट भेजना है एक बार। आईडी सेम नहीं होता है भाई, भेज दिया। आईडी मैं अभी देख रहा हूँ कि आईडी सेम है। You two. आईडी सेम नहीं हो सकता यार, expect वही बोल रहा हूँ ना। शुभम भाई उसको Is it बैन नहीं दे official सकता, or एक्चुअली वो private यूट्यूबर affairs है that bring you here? जिसने ये स्पैम कर रहा है दूसरे लोग के साथ। I have left the human world. Please contact the UID Pavilion regarding matters concerning the commercial port. You don't want to अरे लेकिन ईमेल आईडी भी चेंज कर सकता है, ये ईमेल आईडी पासवर्ड दोनों चेंज कर सकता है। हाँ दोनों चेंज किया है ये। That's why you're here? नाम क्या है उसका? अपना DC पे है भाई, देखो जरा। I'm afraid you came here वासिम in भाई, vain. मैं आपको पहले बोला ना ये गेम का अकाउंट इजीली हैक हो सकता है भाई, कैसे भी हो सकता है। तो वही बोल रहा हूँ, उससे अच्छा गेम अकाउंट डिलीट मार दो। ऐसे भी AR-35 है, 5 स्टार एक भी नहीं When the है, Adepti तो क्या फायदा है entrusted भाई? humans with overseeing Liyue, I knew it Two was step only नहीं a रखा था matter क्या of time इसने? until I had to leave. हाँ? तो स्टेप नहीं रखा है। My अरे Adepti blood अरे makes me भाई unwelcome इसका in आईडी Liyue होता ही नहीं Harbor. ना, वो स्ट्रीमर का आईडी है ये। I delivered the letter and came back to स्ट्रीमर Liyue इसको 20 Harbor, रुपए में अकाउंट दिया, only to पर discover वो that I had बंदा been बोल रहा कि replaced by इसको इसमें Baiwen, विश Bai डाल, Shao, and Bai Shi. विश डाल बोला था। Perhaps विश that नहीं mission डालेगा of तो तेरा mine was अकाउंट just a लॉग इन करके pretext to डिलीट मार remove दूंगा, me. बता रहा था वो स्ट्रीमर इसको। Since और the ये अबे वैसे Pavilion भी gave me a सुन ना, chance to 20 leave रुपए में इसको dignity, अकाउंट दिया था, ठीक है? I decided to be tactful as well. तो ये आईडी पासवर्ड तो चेंज कर सकता ना उसका, तो ये भी डिलीट करना नामुमकिन है फिर। चेंज करा, फिर भी होने के चांसेस है भाई। 2 स्टेप वेरिफिकेशन वालों का ही हैक हो रहा है भाई। ये बंदा कर सकते नहीं कर सकते नहीं पता ना, I हमें क्यों appreciate रिस्क your लेने का, सीधा kindness, डिलीट but मार दो after ना। 1,000 हाँ years, डिलीट मार दे, कितना 20 रुपए में लिया ना, कितने में लिया? हाँ और कुछ भी है ही looking नहीं ना at the उसमें, 5 clouds स्टार नहीं, floating कुछ among नहीं है, the बस mountains brings me AR-35। peace of mind. डिलीट मार दे। हाँ I डिलीट feel मार दे better भाई, now. जरूरत नहीं है AR भाई। बूस्ट हम लोग करा देंगे, तू भी मार दे डिलीट। हाँ disturbs the देखो AR peace of बूस्ट these कराना तो बता mountains? भाई, हम करा देंगे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। मैं देख भाई 2 दिन बैठ के AR-23 चलेगा मैं सीधा। One merely jests. ओ बूस्ट आराम से हो जाएगा भाई, Come here to टेंशन ही chat नहीं है। about the old times with Ganyu. सुन रहा है भाई? हेलो, Looks like you get along quite well. सुन रहा होगा? नहीं इनको बोल रहा हूँ ना। सुन मैं वो कर रहा हूँ, इधर पे पब्लिक भाग जा रही है, वो बात सुन सुन के। नहीं भाई पब्लिक को भी अवेयरनेस देना चाहिए हाँ भाई देखो भाई, जितने भी अपने वॉचर्स हैं अभी भी, कोई यूट्यूब पे अकाउंट बेचे तो भाई खरीदना नहीं। खरीदना नहीं और अपना अकाउंट मत देना विश के लिए हाँ, पूछ ना विश के लिए कोई अकाउंट देना, ना भाई खरीदना किसी से भी अकाउंट, ठीक है? स्कैम हो रहा है, अभी एक बंदा अपने पास है, उसका स्कैम हो गया। नहीं हुआ है, बच गया है ये नहीं हुआ है इसका, हो ये रहा, अच्छा होते होते बच गया ये, तुम लोग बट भी ये ध्यान दो। लगा ना भाई, बहुत सारे केसेस देखा, 14 लाख 15 लाख पैसे डालते हैं बच्चे तो उड़ा The देते हैं matter भाई leaves you स्कैमर। at an impasse then. बहुत Not आते to रहते हैं ना worry. भाई न्यूज़ में One भाई, is exceptional at seeking इतने avenues for गंदे लोग होते हैं conversation. भाई, सही हो रहा भाई, One गुस्सा has आता अरे है one's भाई। वो own बंदा अपने companion in स्ट्रीम पे idle आया था talk एक, for many a year. नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था ना, जिनके साथ Yes. मैंने डोमिन Since you खेला था। are Ganyu's हाँ friends, वो यूट्यूबर है tales from यार। her youth shall one apprise you of, अच्छा मुझे perhaps? पता नहीं था।
क्या अभी डिस्कॉर्ड पे डाला ना उसने Cloud लिंक? retainer. Nothing to be ashamed of. लिंक You डाला were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. सारे वॉचर्स भाग गए भाई अपने, सारे के सारे भाग गए आज। Little Ganyu loved when the वो horns on the top of glitch है her शायद head वो। were caressed. When one was still taking किधर care डाला of भाई? her, मुझे तो लिंक one दिख रहा ही was नहीं। pestered most often to touch her आपको horns. डीएम आएगा? She was नहीं, elsewise नहीं। loath to sleep. फ्री टू वो है ना फ्री प्रमोशन Plump she उसमें। was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. अरे ये क्या बकचोदी है भाई? अरे वसीम भाई क्या? The day Ganyu bumped into हाँ वो a सिद्धार्थ जो आया था ना was the जिसका डोमिन first खेले थे time she अपन, saw a शुभम real भाई। human in the flesh. वसीम भाई इसका So fearful अरे she ये was क्या? that अच्छा she hid in a rock's cleft समझा ये for 2 बकचोदी भाई। days and nights. One found her wailing of a monster she had AR seen. 34 AR 34 XP भी सेम है XP में भाई। Cloud भाई क्या retainer? भाई? हे, Forget it. क्या? क्या बना It's रहा है about भाई? time for कान my में training. कॉलीफ्लावर नहीं I will लगे हुआ take my भाई। leave. भाई ये बंदा भाई दोनों आईडी में सेम क्या बोलते हैं आईडी नंबर दिखा रहा बोल के बोला। मैं बोला ऐसे नहीं दिखाता, दिखा बोलता One's दिखाया intention was merely भाई। to relieve सारे the awkward एक्सपी तक tension. सेम है भाई। भाई मैं क्या भाई मैं कान में Did the exact कॉलीफ्लावर opposite. नहीं लगा भाई। Impressive. क्या Be है that भाई? so? Huh. भाई उसने कुछ But किया रहेगा returning इसमें। to Ganyu, most भाई gladdened सेम one अकाउंट is है of भाई your वो। arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be चलो good छोड़ना for भाई, ये her. सब स्कैमों में मत पड़ो भाई One will बस। tell you more about her ये वो if you सेम हाँ अकाउंट नहीं है। want. मैं एक यूट्यूबर को देखता हूँ फ्री फायर खेलते, उसके 2 अकाउंट्स है, Most तो मैंने भी सोचा benevolent 2 among अकाउंट्स all बना के adepti एक साथ are the चलाऊंगा एकदम Chilin. डिट्टो They सेम, drink only इसलिए वैसा ही spring है। water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of adepti भाई in Jueyun स्कैमर से बचो, Karst might be too lonely for her human ज्यादा यार side. की आईडी के चक्कर में मत पड़ो, Under खुद से हेल्प moonlight कर लो did भाई, one खुद से see ही her last. पूरा ग्राइंड She कर लो। stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she नहीं फिर भी gazed. उसके पास सेम Her 2 thin आईडी है, figure was immersed सेम in the यूआईडी से 2 vast आईडी sea उसके of पास भाई। clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. मैं उसका स्ट्रीम देख रहा था By आज। chance hear this much of Ganyu's thoughts. अच्छा Alone, she will find her predicament hard to conquer. भाई उसको बोलता विश डालो hopes नहीं that तो you will डिलीट कर दूंगा। accompany ये her. सब क्या है, कैसा स्ट्रीमर है वो? Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? बोल टाट। हाँ She वही has sought इसको to वही बोला reclaim her मैं। वो adeptus side एक since ही आईडी से returning 2 to अकाउंट Jueyun चला रहा है भाई। Karst. देखिए आईडी से 2 Whatever अकाउंट चला रहा ना। One has हाँ organized वही सब करे training तो for भी her to प्रॉब्लम achieve होगा, that क्योंकि एक end. आईडी उड़ गया ना तो वो दूसरा भी उड़ She जाएगा। should be in the southern part of Mount Outsong right now, preparing भाई for the trial. क्या ही चेंज करे भाई अब। चेंज करने बोल देना पासवर्ड वगैरह, तो स्टेप वगैरह लगाने बोल दे। चैनल भाई अपना है साहिल भाई, देखो ना डिस्कॉर्ड पे, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ लिंक। वो बॉट भी देगा ना? बॉट से मांगो, बॉट भी दे देगा। डिस्कॉर्ड लिख दो। डीसी था क्या था वो? डीसी था ना? कमेंट डिस्कॉर्ड था, पूरा डिस्कॉर्ड। पूरा डिस्कॉर्ड था। Up and away. कहाँ गया भाई ये? नेटवर्क सो गया क्या? आज फिशिंग करते हैं। अरे रुको जरा करेंगे। ये क्या हो गया भाई, इसको डिस्कॉर्ड का लिंक क्यों नहीं देता ये साला अपना बॉट? एक मिनट रुको, मैं डिस्कॉर्ड का वापस ऐड करता हूँ। ऐड करो
हैक होने की बात ही नहीं है भाई, उसका अकाउंट है ही नहीं वो, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही है कि दूसरों का आईडी मत लो, और दूसरों का आईडी में अपना जीमेल मत डाल देना भूल के भी, बहुत प्रॉब्लम्स होता है उससे भी। और भाई ऐसे स्ट्रीमर होते हैं ना भाई, बता दो भाई हमारे चैनल में, हमें तो अच्छा बात करने आता है भाई ऐसे लोगों से। मैं तो बहुत अच्छा बात करता हूँ ना वसीम भाई, मेरा बात सुन के वो गेम डिलीट मार देगा सीधा। मन कर रहा है भाई बात करो जाके उससे भाई। आईडीसी लिखो अभी, जरा डीसी लिख, दे रहा है क्या? If we've got nothing else to do, why don't I देखो tell a भाई story? जितने भी देख रहे हैं स्कैम से बचो। Oh, here you are, Ganyu. मेरा यही कहना है, आईडी का लेन देन बंद कर दो। Why did you come here? भाई अब गान्यू का I- शक्ल दिखा दिया भाई, अब बुरा लग रहा है मुझे। Humans should not remain सो in the जाओ realm हमें of जाके Adepti भाई, for too long. Considering the 2 बार kindness you पिट have अपना दिया ना- shown हमें, me, अब गान्यू का शक्ल I दिखा can रहे हो let you स्ट्रीम stay पे for भाई, the क्या भाई। Adeptus training. अपना This trial was नाइट बोर्ड prepared मार by गया Cloud लगता है Retainer. साला। Its goal is to नाइट help बोर्ड me साला feel like an कोई Adeptus हाँ again. हाँ करे तो स्पैम करा बोल के दिखा देता है भाई। रुक वापस से ऐड करता हूँ। The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too भाई विश unaware of करने the का मन abilities कर of रहा है others. बहुत गंदा, बट मेरे को स्कारामूस चाहिए भाई। No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. सिम भाई हम्म, बैनर आते 1 सेकंड में खुल जाएगा मेरा स्कारामूस। स्कारा हाँ बैनर आते ही खुल जाएगा। बैनर आने तक तो मेरे पास 20 विश तक तो हो जाते हैं आराम से, और वैसे मेरा पीटी 72 पे है, तो एक 10 विश में ही खुल जाएगा। 3 मिनट का टाइम है। आपके कितने विश जमा हुए? मेरे अभी तक का तो 20 ही है। कितना पीटी है? पीटी लूज हो चुका, अभी तो 0 पीटी है। अपन पूरा 70 पीटी तक जमा कर लेंगे, टेंशन नहीं। नहीं उसके आगे किया ही नहीं क्या एक भी जीत आने के बाद? नहीं भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं बोला अब डायरेक्ट सेव करूंगा। वाह। अब स्कारा निकालेंगे और कुछ नहीं। और वैसे स्कारा के साथ वो कैरेक्टर भी आ रही है ना, क्या नाम है उसका? फरूजान। There's a lot of gliding around. फरूजान कुछ नाम है उसका, वो बफ करेगी, स्कारा को बफ करेगी और शाओ को बफ करेगी। शाओ तो है ही नहीं सब पे। साला नीचे से क्यों चालू हुआ, ऊपर से चालू हो? हाँ भाई ऑल टाइम गेमिंग भाई, बाद में करेंगे भाई मछली। अरे मछली दिमाग खराब है भाई, एक टाइम पे नहीं होगा वसीम भाई मछली का। वो एक वेपन निकालने 1 हफ्ता लगेगा। दिमाग खराब है भाई। भाई निकल गया। अरे वाह क्या है मैं भाई। हाँ अबे गिर गया तेरी तो। अच्छा उड़ गया। किधर जाना है भाई? ऊपर जाना। लग गए मेरे, मैं गिर गया हूँ। यहाँ से कोई हवा अच्छा है ना? इतनी जगह मारता है बड़े। मेरे को याद भी नहीं है मैं करा बोल के, जमाना हो गया शायद ये करके। Ganya's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. अबे सबको मारना है भाई। मारो भाई गान्यू। Next on the agenda, साला गान्यू से एनिमी से ज्यादा तो ये बकचोदी करने दे रहा है भाई। क्या बकचोदी है भाई? वाह वाह। लगाना रे, लगाना, वहां मत बोल। 3 मिस किया उसके बाद लगा। भाई वो फूल जमा करते जाओ भाई, वो बोल तारा दिमाग खराब हो गया जमा करते टाइम। बता हाँ ये रहा सब पहाड़ों पे है ना, बहुत सारे मेरे पास। मैं जमा कर लिया था पहले।
वो हाथ दिखाता था ना तभी। वाह We're way behind schedule. चलो भाई मैं डीसी में 5 मिनट के बाद आऊंगा, पाव भाजी खाना। We've completed the task. मैं 100 का टाइम What do किया you था। think? अच्छा I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. ठीक है आऊंगा मैं, 5 मिनट में आऊंगा Planning वैसे to do मैं once your डिस्कॉर्ड training में। was over? ठीक है चलेगा। The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? अरे ऑल टाइम गेमिंग भाई करते हैं ना, डोंट वरी। No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? चलो भाई 100 सब्सक्राइबर Conqueror of करो यार, demons. 91 हो गए हैं। Huh. So it's Shao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first, too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are. Let's go. साहु क्या कर रहा है? You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between हम us. लोग ऐसे गेम को क्यों I'm परचेस just करते हैं helping you जिसमें with your स्टोरी टाइप training. हो? मैं परचेस क्या That's किया यार, all. फ्री है। Xiao is such a strict teacher. You're neither an adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. इतना ज़्यादा मेरी जान डैमेज दे रही है कि मैं पानी में डूब जाऊं। मैं 5 मिनट में खा के आया। आ भाई चलेगा, आ जाओ। मतलब कैरेक्टर्स और इनके लिए। अरे अपने यहाँ तो अभी तक एक पैसा नहीं खर्चा किया होगा। Next on the agenda. The trial's begun. Paimon can feel it in the Defeat air. 26 Even the monsters. weather's changed. अरे तुम्हारी माँ की ना तुम्हारी। अरे उठो। Germinate!
किधर है भाई और है क्या? और Body and mind. I'm going in. भाई गेन्यू चेंज हो जाओ। No touching. Yeah. Access denied. For Rex Lapis. Time for a light show. कौन आ रहे बिजली वाले? No touching. No, my sword. Let me weave you a hood. Fuse is lit. The festival. अरे मर गए भाई कैसे? ये नीचे उतर बे। Let's light it up. Next on the agenda. Access denied. No touching. भाई क्या बकचोदी है? Witness the power of Gugwa. Teamwork is dreamwork. Yeah. Don't. Access denied. All hail. Next on the agenda. No touching. Born of ice and frost. Everybody stand back. कोई मेरे आई पे This is हार्पिक great. डालो ये I feel so मुझसे देखा नहीं relaxed all डालो। over. I could almost float away. वीर अरे मैं ज्ञानी से खेला नहीं, पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन सा अटैक कौन सा रहेगा यार। मेरा ध्यान भी पूरा उस पर ही है, तुम लोग का चैट नहीं पढ़ पा रहा। एक तो मोबाइल में देखने तकलीफ हो जाती है यार। अब पहले बताओ ना 4 शॉट यूज करना। I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. कहने पहला बताया तो करो ना। ज्ञानू जब ज्ञानू मेरे को खेलने मिली तब भी बोल देना चाहिए था ना कि 4 अटैक यूज करना। Understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti. E then Are all of 4 you the shot, Adepti of okay. this mountain? चलो ज्ञानू निकलेगी तो Great. शॉट लगा। My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, इसको wealth, अडॉप्ट तो and a good बोला। career. Oh, so it's a pilgrim. I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. ज्ञानू तक इंतजार करो। Adepti हाँ don't भाई। help every pilgrim for free. For
Free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who poses an Adeptus to cheat people out of their money? Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. भाई गजब बेइज्जती करके गया. Stopping you? Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said... He was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that I... बेचारी की बेइज्जती करके गया. मार पकड़ के साली को. मारो पकड़ के. I'm unwelcome in Liyue Harbor. ब्रो एक यूट्यूबर के 2.33 के है बट 10 वॉच एंड यू 6. अरे भाई हो जाएंगे अपने भी 10 वॉच. वसीफ भाई प्रो प्लेयर है ना. अरे भाई कुछ भी. It's true. Just believe us. All right. I'll go with you to Liyue Harbor. अपने तो 16-17 तक के गए, 20 तक के भी जा चुके. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. अपनी पब्लिक पूरी लॉयल पब्लिक है भाई. ये पत्थर कब खोलने मिलेगा समझ में नहीं आ रहा. पत्थर का काम कब खत्म करूंगा मैं. 1600 मीटर हार्बर में चलो. वसीम भाई का बड़ा है ना इसलिए चाँद का कुछ भी लिख रहे हो. वसीम भाई का बड़ा है ना. क्या है ये. आई मीन दिल साले पूरी बात लिखा कर. I'm still... Come on, Ganyu. We're almost there. You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a कुछ point. भी बुलवा रहा है कमीने. It would be... That's right. आई बटन दब Where do गया. you want to go first then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. ओके चलो. Happy to come with. डैंक में ये बाबा कितना दूर है. यहाँ से जाएंगे हम. इतना उड़ के क्यों जाएंगे वहाँ से. नॉट. अरे भाई नॉट ही लिख दे पूरा. वो सब क्या लिख रहा है. ये भाई कुछ एक्सप्लोर हुआ है मेरा. कुछ भी एक्सप्लोर हुआ है क्या बता ना. कुछ एक्सप्लोर हुआ है क्या. लानत है मेरे ऊपर. I was bored and ये भाग गई. अबे किसमें बिजी हो गई भाई बता तू. एक मिनट भाई लोग फोन आ रहा है.
किसमें बिजी हो गई? वर्थ ऑफ वेट एंड मोरा, वर्थ ऑन वेट ऑफ मोरा किधर है? हाँ, इधर है। अरे कौन है भाई फोन कर रहा है? 1 मिनट रुको गाइस। ओके, हेलो। हाँ, 10:30 बजे। हाँ, मैं लाइव स्ट्रीम पे हूँ। हाँ, आ जाऊंगा। वो तक वो स्ट्रीम कराना है ना, मैं करवा दूंगा। हाँ चलेगा। मैं तो रात तक का नहीं आ सकते क्या? थोड़ा रात तक का नहीं आ सकते? तो ठीक है, मैं बोलता हूँ ना फ़ोन करके। मैं हूँ, जा रहूँगा। ठीक है, ठीक है। ओके भाई, फ़ोन था, सॉरी। कितने साल से खेल रहे हो? अरे भाई, मैं तकरीबन 7 साल की उम्र से खेल रहा हूँ। गेम, ये गेम नहीं, सब गेम। बेसिकली मैं फाइटिंग प्लेयर हूँ, मतलब फाइटिंग गेम खेलने वाला प्लेयर हूँ। ये तो अभी अभी चालू किया स्टोरी क्वेस्ट, स्टोरी वगैरह वाले गेम अभी चालू किया। डोंट लाइक हिम। कितने चैट छूट गए रे भाई मेरे। आई वॉज बोर्ड एंड आई गॉट लैला, शी इज़ नॉट फन टू प्ले, ओल्ड चाइल्ड एंड प्ले, डोंट लाइक हिम। ये यार, ये फ़ोन रोज़ आता है स्ट्रीम पे। अरे हाँ भाई, यही ना प्रॉब्लम है भाई, फ़ोन आता है, यही इशू है। हो जाएगा किसी दिन भाई, अपना फ़ोन साइड में पड़ा रहेगा। योमिया के साथ शिल्डर कैरेक्टर से नीडेड। हाँ है मेरे पास, को वो करना है। वो तो मैं सुमेरो कह रहा ना, तो डेंड्रो कैरेक्टर चाहिए था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था। आरा नारा कर रहा था ना, तो डेंड्रो चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया था। I will protect you. अबे गलत जगह चला गया। चलो कोई ना, घूम के जाएंगे। शो मी योर कैरेक्टर। जोंगली पुल करो। अरे कहाँ से पुल करूँ? मिलना भी तो चाहिए। एक पुल में तो आ गए। अभी बता रहा हूँ भाई को कैरेक्टर, ये बकबक खत्म हो जाए। The sound of the waves in this भाई familiar मैं वापस port. यहाँ कैसे आ गया बे? The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. कॉली बेट कैरेक्टर है क्या? पता नहीं भाई, Well, मेरे I पास है used to लेकिन be मैंने so अभी तक busy. यूज़ नहीं किया उसको। I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, that's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, डेंड्रो एमसी when I कॉली think about से my बेहतर time है। here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Is that? It is! It's Lady Ganyu. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. Lady Ganyu? Why are you calling her that? Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... भाई मैं तो मेन कैरेक्टर यूज़ करता हूँ डेंड्रो के लिए, अच्छा है वो। That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. हाँ भाई I सही must है। ask for your discretion concerning my identity. कौन ड्यूल डेंड्रो? Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards.
मछली most people's eyes, ऑल टाइम I'm गेमिंग just मछली के a पीछे पड़े रुको, forgetful मैं and भी अभी wordy ऑर्डर old देता हूँ. Uncle Tian is too modest. He's been मेन around कैरेक्टर for a को long लिया. time. There's no one who can replace a person of such noble character. मैंने भी ट्राई किया था, मुझे भी नहीं मिली नाहिदा. योमिया पे ट्राई किया तो मिल गई. Ah, what an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right I over got the technology, last I got do however look many my decades. jeans. Uncle Tian, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu. मछली पकड़ोगे तो आपका कैरेक्टर खुश होगा. My होंगे. अच्छा apologies. भाई. It's not intentional. So I have just next a guaranteed. habit हाँ from भाई my next मेरा भी younger guaranteed है तो days. मैं निकालूंगा. Thank you for looking Scaramucci. after me when I first ascended to my position in the chief. Say my pulling for Scar. हाँ मैं भी करने वाला हूँ भाई, सब करने वाले हैं Scar के लिए. Many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries. Yeah, technology is much better than I don't know college. if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems मेरी to be a औकात bit नहीं, वो अलग बात है. troubled अरे recently. भाई क्या औकात नहीं यार सब. Yes, she works at UID Pavilion and she's my junior. How can I help her? I might go for. I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? अरे मैं कुछ पैसे लगाया नहीं ऑल टाइम गेमिंग भाई, बस प्रीमोस जमा करते रहो, मिल जाएगी, पोल Solving करना the हो जाएगा Qixing's भाई. problems has always been in my job description. मैं रेगुलर नहीं खेलता इस गेम को. मैं तो भाई अभी कुछ महीने भर से रेगुलर ही खेल रहा हूँ. मैं भी तो वैलोरेंट खेलता था और किंग ऑफ फाइटर्स वगैरह खेलता था. कितना दूर है भाई? अच्छा यूरी है. पता है तुम F2P हो. मछली आओ. मछली के पीछे हाथ धो के पड़ गए भाई. रुक, इससे क्या चाहिए भाई? चलिए खत्म हो गया. बीच में वो स्टोरी भी चालू हुई थी. वाह, किधर गई मेरी गेनिंग की स्टोरी? मछली वेपन पेन भाई मेरे को भी निकालना है मछली वाला वेपन. रेडन है नहीं भाई, रेडन नहीं है. मैं रेडन के टाइम से खेलना ही नहीं चालू किया, अभी चालू किया. मेरा फर्स्ट बैनर था साइनो, सेकंड ये आई नाहिदा एंड योमिया. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from UID Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, तुम भी आ जाओ what can you tell लाल me भाई. about the अल्टाम problem? गेमिंग ग्रुप जाओ यार. Where should I start? ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं है कि 5 स्टार फ्री? हाँ यार ऐसा होना चाहिए. 5 स्टार नहीं तो कम से कम 5 स्टार There वेपन are फ्री है. obvious irregularities in the tax declarations of 2 stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed.
Well, is there any solution you can advise? Naturally. 5 स्टार का I've नहीं, dealt वो with छतरी similar 4 issues स्टार की hundreds of है। times. Give me a लियो moment to भाई consider the best 4 स्टार approach की in this छतरी है वो, scenario. इवेंट में देखो ना, छतरी वाला वेपन देखे ना जो 4 स्टार है वो। All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar अरे wares. 4 स्टार है, मैं कल लाइव स्ट्रीम किया हूँ, देखो उसका 4 स्टार के थे। In that 3 is case, another event। और I another know event what में you एक भी mean, Miss वेपन नहीं Ganyu. दिखा मेरे को यार, खाली प्रीमोस वगैरह दिखे। एक कार्ड गेम लॉन्च किया, एक हाइड एंड सीक है, और एक दूसरा वो कौन सा था यार, वो पिन बॉल जैसा खेलने का, जैसा अपना वो खेलते नहीं थे क्या बचपन में, वो बॉल को ऊपर उछालने, वही इवेंट है। टोटल 4 इवेंट तो आए थे, Miss Ganyu चारों में plans to 3 में let them प्रीमोस है, expose एक में each छतरी other. है। Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. अबे कितना फॉलो कराओगे बे, कितना नचाओगे? कितना दूर है बे? इधर ही तो है बाजू में। चलो। भाई नो शेयरिंग रूल बोला था मैं 15 मिनट पहले। अबे तुम लोग के चक्कर में मैं किधर जा रहा हूँ चैट पढ़ते पढ़ते। और नीचे है वो, छोड़, अरे छोड़, छोड़ दे, गिरेगी नहीं, छोड़। वसीम भाई हेल्प करो भाई We meet मेरे को। again, traveler. And you must be अरे from the कमीना। UID pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer तो you इसका my तो ये wares. करेगा। That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit मुझे is क्यों not लग रहा है sufficient कि to accept मछली orders directly from के UID लिए मेरे Pavilion. को बैन मिलेगी। Should we need to नहीं place such बैन an नहीं order, मिलेगी, we कोई would इशू certainly नहीं। go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. क्या पता Oh, भाई। Tax records? Thriving? नाइट बोट टुकड़ा मार सकता Is है, there वो नाइट anything बोट का you'd कोई like to भरोसा share नहीं, with us, Mr. Bolai? मार देगा Don't वो। let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax इसमें records. I'm sure I'll find something 37.55 मिनट fishy पे। in there. You know Second Life's business so well? ओके देखता हूँ मैं एक बार, course. मैंने Ugh, ध्यान नहीं their दिया every शायद फिर। transaction makes my मैंने blood boil. I'd rather lose money मैंने myself देखा than see स्टार्टिंग that से यार, मेरे rascal को नहीं make दिखी ये some. वेपन। मैं खाली वो छतरी वाला वेपन दिखा था यार 4 स्टार का। चलो ठीक है, एक बार वापस मैं स्ट्रीम देखता हूँ वाला, लाइव स्ट्रीम है मेरे स्ट्रीम के अंदर, मैं देखता हूँ। Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. और लाइक्स बढ़ाओ यार, लाइक्स बढ़ाओ। Very carefully. Line by line and word by word. भाई सारी मछली पकड़ने के बाद ईट कर लेंगे, फ्री Here, नहीं I है। found it. मैं 2 साल से खेल रहा हूँ, मेरे That मेरे exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. ऑलमोस्ट 2 है। He क्या even बात कर रहे flaunted it in front of me. हो? मेरे पास Look तो at the कुछ भी tax नहीं है record. भाई। Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the Genshin वाले documents बुद्धू related to नहीं this है transaction. No कि wonder there दे was no देंगे trace 5 of him. स्टार। मेरा फर्स्ट I स्टार told you वेपन so. है। Just as I expected. अबे तो I फ्री है तो can't wait to- अच्छा है ना, फिर मैं Miss निकालूंगा Ganyu, इसको। despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha!
you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. ठीक है, मैं लियो He भाई wouldn't be देखूंगा बाद में swayed by इसको. the likes of अगर Dangshan. अच्छा है 5 स्टार है तो I फिर hope सही है so. भाई. मैं भी Let's कोशिश go to करूंगा फिर Fanmu इवेंट में निकालने Carpenters. का. It should be near Chingsa village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa village. It's all right, Weishin. You can stay in Leo. अरे क्या होगा शुभम भाई और भाई. Leave the rest to us. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. गहनियों कितना दौड़ा रही है यहाँ से वहाँ. एक ही जगह करा ना क्वेस्ट यार. यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ा रही है. कितना ना चाहिए. तरुण रुक जा मेरे भाई. मेरा भी सर घूम रहा है आज. फिर भी आज स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई. बहुत सर घूम रहा है मेरा. Welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Chingsa really is full of lonely old people. ये लोग को रेडन को I फर्स्ट heard क्वेस्ट में that, डालना fine चाहिए था. one. हाँ Paimon's sorry. Master Lu, ब्रो इतने we've स्टोरी just क्वेस्ट come करके to एक see भी you याद and है. ask you some questions. नहीं भाई. देख लिया Don't खत्म. worry, मजे I खत्म. know. You're from the UI Pavilion, right? Why would the Chising care about an old man like खाली me? इतो की थोड़ी बहुत याद है. Whatever. इतो की अच्छी लगी You ज्यादा said मेरे that को. you इसलिए wanna मेरे को ask थोड़ी me बहुत याद है something. उसकी. Ask away then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. फिर आर्कोन करो. It was a big order. आर्कोन समरो का ही How could I बचा है. forget? बाकी खत्म. समरो का एक ही बचा है. नाइदा वाला Sure बस. enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse. मछली west वर्ड of को बैन here. कर दूंगा. हाँ भाई स्पैम But मत some करो यार. टाइम troublemakers बैन have भाई. recently moved there. सबको चैट करने में invading फिर इशू my होता है ना. चैट warehouse. में बात करने में. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. नाइट बोर्ड बाबा हाय. वो नाइट वन सुनता ही नहीं है भाई. It's one of the Fatui. पता ही क्या कर रहा है. हटा दे भाई They ये. must be plotting something against Liyue Harbor. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides,
I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Chising. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. जा ना, खुद मार ना पाइमोन, खुद मार ना, दूसरे के भरोसे क्या बैठ रहा है, बकबक करता, जा खुद मार। Time for a light show. Crest, don't get boss fight. Oh, you scoundrels! I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Chinksa village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to what? Pick berries over there. यार आज थोड़ा स्ट्रीम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। I must admit, I didn't expect you तबीयत to ठीक come नहीं up लग with रही such a यार। silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Chinksa village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? मेरे को भी दो मोड। By how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. एरोप्लेन मोड। भाइयों आज सही में आज जल्दी खत्म करना पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। I also feel मेरी भी ठीक नहीं है ना, मेरी that वाइफ he's की। telling the truth. जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, बहुत हो गया सुबह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। I misjudged the situation and offended you. My apologies. ये तरुण स्कैम कर रहा है। Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I made a laughing 250 stock out of interesting। myself. I might have spent too much time away from work. भाइयों ये स्टोरी के My बाद intuition is not मैं as accurate स्ट्रीम as it खत्म used to करेंगे। be. थोड़ा सही नहीं है। Always nice to teach the Fatui a lesson. तरुण, शुभम, साहिल Let's keep भाई moving जितने भी towards देख रहे Master हो, Lu's warehouse. ये स्टोरी के Our बाद goal is to अपन get the स्ट्रीम invoice खत्म after all. करेंगे आज। बाकी कल सुबह देख लेंगे, सुबह कर लेंगे स्ट्रीम। Feeling not well. ये स्टोरी खत्म कर लेते फटाफट। वाह ये लोग घर पे कब्जा जमा कर रखे हैं। वाह ये दो कितना शान से चल रहा है। This is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. अरे 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 साले पगला गया क्या? अरे ऐसा कौन मारता है? Rain outlines your fate. Rain, the fuse is lit. किधर मार रही है पागल? पगला गई है क्या? अंधी हो गई?
कौन बचा है? किधर है? किधर है? कहाँ से मार रहा है? दिख नहीं रहा। मैं अंधा हो गया क्या? तो इधर है। आओ तुम लोग सब इधर आओ। Teamwork is dreamwork! That didn't count! अबे सब सीढ़ी लेके बैठे हैं। Fire hazard! अरे ये कहीं भी मारती है यार, समझ नहीं। Steady as stone. Time to clean up. Fuse is lit. All clear. Quick, let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. इधर पर रोड साइन है तो Adventure time. Adventure time. उतर रहे, कहाँ चढ़ रहे? This one is Second Lives. We finally found it. Let's bring this in. It always rains when I go on an adventure. Ah, Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Isn't it Huixin from the UI Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is?
It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. The lie? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tien managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tien's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Huishin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat! Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senua Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. किधर गए सब भाई? Off we go! Adventure time! Off we go! Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also 3 much लोग के लिए इतना appreciated. सारा खाना वाह That's चलो so भाई kind गुड of you, नाइट हाँ Huixin. तरुण भाई मैं भी जा रहा हूँ You मेरा went भी to तबीयत great ठीक नहीं lengths to है ये organize क्वेस्ट this. खत्म हो जा Truth be told, फिर हम बंद कर apart देंगे from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the UID Pavilion staff because I've always looked up to you.
I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the UID Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the UID Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I... Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Paimon's still hungry. Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look! Look who's back! You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right.
All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Benny's adventure team, assemble! Or not. चलो भाई आज के लिए बस यार, आज तबीयत ठीक नहीं है। Ow! Where did that come from? आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, आज तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बाकी कल दिन में स्ट्रीम कर लेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू यार, बाकी सब लोग जो भी आज स्ट्रीम पे आए, थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए भाई। थैंक यू लियो भाई, थैंक यू तरुण, थैंक यू साहिल, थैंक यू शुभम, थैंक यू ऑल टाइम। चलो चलते हैं भाई आज के लिए स्ट्रीम, बस इतना ही। गुड नाइट ऑल। चलो कल मिलते हैं भाई, अब आज कल थोड़ा सही हो जाएगी तबीयत तो कल खेलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू टू भाई, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, बाय।